So hello everyone. This is also a type of factorization. So exercise, this is your exercise 13C, and this is also a type of factorization. Okay. I hope you people have gone through exercise 13A, in which you were taught factorize by taking out the HCF. Then 13B, where you were taught how to factorize by grouping. Here in 13C, we shall be extensively using the formula a square minus b square is equal to a minus b multiplied by a minus b. So we shall be extensively using this particular formula. ठीक है, चलो. So instead of a, they can give you anything, भेड़ बकरी कुछ भी. So in this here, instead of b also they can give you anything. So you will have to convert this into a minus b into a minus, sorry, a plus b, sorry, a minus b into a plus b. There was a small mistake. Now there was a boy who asked me, a minus b multiplied by a plus b is equal to a square minus b square. How? क्या लोल है यार. Multiply it and find it out. When you multiply these two, you got a square minus b square, and this became a formula. Kaam khatam. So let's start. 16 minus 9x square, isn't it? 16 minus 9x square. तो अब हम लोग फिराक में रहेंगे to convert this one into this particular form. ठीक, अजी. चलो हम लोग रहते हैं फिराक में. So फिराक में रहेंगे क्या? 16 can be written as 4 whole square, and 9x square can be written as 9 का square root is 3, so 3x का whole square. I hope I am right. चलो, once you have converted this into a square minus b square के form में, so next step is a minus b, a plus b, 4 minus 3x and 4 plus 3x. ठीक. Similarly 1 minus 100 a square. अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जी. 1 means 1 का whole square, isn't it? 1 का whole square, and 100 a square means 10 a का whole square. So what will you get? You will get a minus b, a plus b, a minus b, that is 10a, and a, that is 1 plus 10a. So either you write a minus b or a and a plus b, or a plus b and a minus b. It is the same thing. कोई बंदिश नहीं है, isn't it? Similarly, the same type of sum, ये वाला यार, 4x square minus 81y square. मुझे इसे बनाना है. So 4x square means what? It means 2x का whole square minus 81. 9 nines are 81. 9y whole square. So see, I have converted it. So 2x minus 9y and 2x plus 9y. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. As I told you, they will keep on increasing the level. कि अब ये वाला बना के दिखा, वो वाला बना के दिखा. तो देख के तो देखो कैसे नहीं बनता है. Because I have a रामबाण. a square minus b square is equal to a minus b multiplied by a plus b. तो कुछ भी होगा भेड़ बकरी, सबको I will convert it in this form, a square minus b square के form में. So 4 by 25 minus 25 b square. तो ठीक है, 4 का स्क्वायर इज 2 and 25 का स्क्वायर, इसको 4 का स्क्वायर रूट इज 2 and 25 का स्क्वायर रूट इज 5. So this can be written as 2 by 5 whole square minus 25b square is 5b square. So you might be observing that they are giving you perfect squares. हाँ, आगे चल के they will not give us perfect squares, because as I told you, they will keep on testing.
सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट यू लेट अस कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, उसके बाद में हम लोग टेस्ट करते रहेंगे इसे खट्टा या मीठा. सो 2/5 माइनस 5b, जो देखो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, 2/5 प्लस 5b. इतना आने के बाद में पता है क्या करना है? छोड़ देना है यार, यही तो आंसर है. गौर से सुन रहा है. हाँ, और आगे क्या होगा? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 5. एज आई टोल्ड यू नंबर 5 में a प्लस 2b, नंबर 5 में a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अरे बाबू, दे हैव ऑलरेडी गिवन यू इन स्क्वायर, सो व्हाई आर यू गेटिंग पैनिक? हियर ये पूरे टर्म को जो आप देख रहे हैं ना, कुछ तो नया है. नथिंग इज ओवर हियर. चलो, a प्लस 2b जो देख रहे हैं ना, ये वाला दिस इज अ सिंगल टर्म. सो सिंगल टर्म का स्क्वायर माइनस सिंगल टर्म का स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज ये वाला a प्लस b, that is a, and a means a plus 2b minus b minus a. हो गया, काम खत्म. So a minus b and a plus b is our solution. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं नंबर 6 में. They will give you the same type of sum. आदत जो लग गया है, 3b whole square and minus 16b square. So here, have a look. This is in whole square, but this is not in whole square. There will be some of you who will say ये तो whole square में है ही. ये whole square में नहीं है. They have just given you the value. You will have to convert this as 5a minus 3b whole square, which is already given, और ये वाला को minus 4b का whole square. तो ये whole जो है ना, खोल, वो करना है, whole square में convert करना है. ओके, चलो, 5a माइनस 3b एंड माइनस 4b, तो 5a माइनस 3b, दैट इज a माइनस b और a प्लस b. 5a माइनस 3b जो हमारा फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म, दैट इज 4b. सो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म. 6, 7 में देखते हैं. 7 में क्या है यार? 7 में a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर का होल स्क्वायर. अच्छा, सो दे हैव गिवन यू a टू द पावर 4, ओके, एंड देन वॉट एवर अंदर में कुछ भी हो का होल स्क्वायर. Let us convert this into whole square. So a4 means a square ka whole square. A to the power 4 means a square ka whole square. Because in exponent you might have studied that power over powers are added. So a square ka whole square minus, it is already given in square. So the next step is first term minus second term, first term plus second term. So first term, देखो यहाँ ये वाला, ये this is first term minus second term. So minus second term means minus, you will have to multiply whatever is the content inside the bracket. So you will get a square and plus 3b square. Sign will change, and here a square plus ये वाला, तो नो साइन चेंज, देर विल बी नो चेंज ऑफ साइन, प्लस 3b. अरे यार माइनस लिखो ना. हाँ, गाड़ी छूट रहा है. 7, 8. कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना, मुझे तो दिक्कत है. मैं देख रहा हूँ कि ये वाला इज यूजलेस. सो 3b स्क्वायर एंड हियर 2a स्क्वायर एंड माइनस 3b स्क्वायर.
तो ठीक है, at the end when you find that something can be done or something can gets cancelled inside the bracket, उसे भी ध्यान में रखना है. तो आ जाइए factorize में, that is number 8, and what is there in number 8? We have 5a minus 2b का whole square and minus 2a minus b का whole square. As I told you, this whole term should be treated as x and whole term should be treated as y. X square minus y square is already given in square form. Therefore, first term minus second term and first term plus second term. First term minus सेकेंड टर्म, तो माइनस सेकेंड टर्म तो अंदर का साइन चेंज कीजिए ना जी. ये प्लस 2a विल बिकम माइनस 2a एंड माइनस b विल बिकम प्लस b. सिमिलरली 5a माइनस 2b, दिस वन प्लस दिस वन, तो प्लस दिस वन प्लस जहाँ रहा नो चेंज ऑफ साइन. प्लस 2a प्लस सॉरी माइनस b. प्लस रहने पे क्या होता है, चेहरा पे चमक आ जाता है, और ये माइनस आने पे वही डेंजर जोन. 5a माइनस 2a, कुछ काट छाट भी हो, 5a माइनस 2a इज 3a माइनस 2b प्लस b माइनस b, और यहाँ पे माइनस b. 5a प्लस 2a 7a, और माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3b. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस सम्स. ओके, आज नंबर 8 देखते हैं. सी, स्टे ट्यून बिकॉज द लास्ट फ्यू सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर इन फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू लर्न द फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8, फिर जिंदगी में विद इवन इन 9 और 10 ऑल्सो यू विल नॉट हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस. 1 माइनस 25a प्लस b का स्क्वायर. तो देखो बाबू यहाँ पे 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर. So the whole can be written as 5a plus b का एक मिनट whole square. This can be written, this was in square and 25 became 5 square. So 5a plus b whole square. उसके बाद में क्या कीजिएगा, 5a plus 5b का whole square. It is the same thing. So now what I am going to teach you people, कि अगर आप इस तरह का सम देखें, so you take the square root inside, okay, without going into unnecessary details. ये सब. So here 1 means 1 square and minus you take 5 inside, तो 5a plus 5b का whole square. तो काम हो गया. अब a प्लस b और a माइनस b आप लोग कीजिए, मैं नहीं करूँगा. ठीक है, कम टू नंबर 10. नंबर 10. सो इन नंबर 10 द सेम थिंग, 4 2a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b whole square. So as I told you people that when you find this kind of sums, you take the square root inside. तो 4 का square root है 2, 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए. So this will become 4a plus 2b का whole square और minus, this is already given. Okay, so no issue at all. कोई बात नहीं है, इसे बना देता हूँ. ठीक है, so a plus b and a minus b, 4a plus 2b, a plus b, that is a minus b, and similarly multiplied by this one 4a plus 2b and minus this one. So minus second term means you have to change the sign inside. So minus a plus b. Okay, so 4a plus a, now solve it, equal to 5a and 2b minus b is plus b. Similarly 4a minus a is 3a and plus 2b plus b is 3b. ठीक है, now you can leave your answer over here. लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि everyone, as I told you, everyone wants to look beautiful. Okay, so what I'll do, I find that 3 is the HCF in these two numbers, so you extract 3 out. तो when you will extract 3 out, so you will be getting a plus b यहाँ पे, 3 बाहर. So you people can write this as
3 5a plus b multiplied by a plus b. ठीक रहा, बढ़िया रहा. Similarly in number 11, or just I will do, I'll give you the hint and you do it yourself. तो hint में क्या है बाबू? नंबर 11 में 25, let me use black pen, 25 2x plus y का होल स्क्वायर माइनस 16x माइनस y का होल स्क्वायर. एक 16y x minus y का होल स्क्वायर. एज आई टोल्ड यू, यू टेक 5 इनसाइड एंड यू टेक 4 इनसाइड. नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 है ना जी. स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. सो 5 2s are 10x plus 5y whole square minus here 4x minus 4y whole square. So then after that you can say a plus b and a minus b में आप लोग डालिए और बनाते रहिए. ठीक है. नंबर 12 इज ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप. नंबर 12 में देखिए, नंबर 12 में लेट मी गिव यू अ हिंट. In 12 you have the sum as your 49x minus y square and minus 9 2x plus y square is 49 में से 7, that is square root of 49 7 अंदर डालिए जी इसको. 7x minus 7y whole square and 3 will go inside, that is 3 2s are 6x plus 3y होल स्क्वायर. उसके बाद में a प्लस बी और a माइनस बी में डालिए, सॉल्व कीजिए, बनाइए. एज आई टोल्ड यू दैट until and unless you work like me or you make, or you can say solve the sums like me, paper and pen method, nothing will get into your head, isn't it? समय कितना हो रहा है? सो हमारा समय ज़्यादा नहीं, only 16 minutes is there. Now they have given you few numbers. ये 62 by 3 whole square and minus 21 by 3 whole square. So a square minus b square. So a square minus b square is a plus b and a minus b. लेकिन पहले साफ सुथरा तो थोड़ा सा कर लूँ यार. 6 3s are 18 19 20. 20 by 3 whole square and minus 7 by 3 whole square. अब a plus b, a minus b, a plus b and a minus b. Who will solve? Who will solve? So when you will solve this, you will get 27 by 3 times 13 by 3. So when you will multiply 27 by 3 times 13 by 3, then see 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 13 3s are 39 is your final answer. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है. Similarly number 14 is also of the same type. So 14 is also of the same type. आप लोग बना लोगे. Number 15 में they have given you decimal numbers. So decimal numbers में 0.7 square minus 0.3 square. तो ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी. कंटी भी यार दर्द कर रहा है. पॉइंट a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो 0.7 0.3 0.7 भी आप लगा सकते हैं. इसका भी हक है, मुझे हक है, मुझे हक है, मुझे हक है. सो 0.7 plus 0.3, what you will get? 1.0, that is 1, and 0.7 times 0.3 is equal to 0.4. मल्टीप्लाई करने पे 0.4. ठीक है, ओके. तो सबसे ज़्यादा गोली कौन चलाता है बंदूक? मैथमेटिक्स टीचर. सी, as I told you, dish is here and dish is there. Similarly, evaluate 4.5 square minus 1.5 square, and I hope you can do it yourself. Now, number 17 में बाबू, 17 में what I find that in number 17 this sum is okay, there's no problem with the sum,
But again, where the problem lies, I'll tell you. Here in 17, should I do 17 over here? चलो कोई बात नहीं, I will do 17 over here only. 75 x plus y whole square and minus 48 x minus y whole square. Clear? So what I find over here is, where the problem lies is, this is in square, fine. This is also in square, no issue. Achha, instead of 48, they should have given us, for example, 49. तो 7 चला जाता अंदर. 75 की जगह they should have given us 81. 9 चला जाता. तो ये तो प्रॉब्लम हो गई. तो प्रॉब्लम नहीं हुआ. In 75 and in 48, let us see what else we can extract. 75 or 48 में, remember what you had been taught in the previous exercise 13a, where you had been taught that you first try to extract HCF. So 75 or 48 में, when you will take out 3 as common, you will be getting, देखो तो 3 कितना बार में, 25 times 75 x plus y whole square. Okay. Similarly, over here, when you will, एक मिनट, ये तो मैं 3 दोनों में से ना ले लिया बाबू. So minus how much? 48, 16 x minus y square. Yes. So when I took 3 common from both of them, what did I get? I got 25 over here and 16 over here. Now you people can take 5 inside. So 5x plus 5y whole square minus 4x minus 4y whole square. तो ये 3 जो है, this will keep on hanging till the end. Now you people can solve inside the bracket a plus b and a minus b. So when you solve a plus b and a minus b, what will you get? What are you going to get? So what are you going to get? Let us see. यहीं पे बनाते हैं यार. So 3 will remain as it is. 5x plus 5y plus 4x minus 4y एक ठो ये, और फिर 5x plus 5y minus 4x and plus 4y. ठीक, a plus b, a minus b. 3 is already over here hanging. So 5x plus 4x will be equal to how much? 9x. At the end you will get 9x and 5y minus 4y. 9x minus y. Similarly over here you will get x plus 9y. See, 5x minus 4x is x plus 9y. 3 will be hanging till the end. This is your factor. ठीक है, तो पेज क्यों वेस्ट करना? Okay. How many sums are there? Yes. So from number 18, what is the time? Yes. Again, more 5 minutes. I'll not take more time. So from number 18, what do we find? That there are some sums of great concern. From number 18, the sums are of great concern. Kahe babu? Because it's of different type. Okay? Different type. So the type has again changed, and here I find a square plus 4a plus 4 minus b square is our sum. This is what is the sum which has been given to us. Take. Now a square plus 4a plus 4 minus b square, when you will, this can see, कुछ भी कर लो, you cannot group and solve it. This cannot be done by grouping or by taking out HCF का तो सवाल ही नहीं है. So we will have to see something else. Neither you can convert this into a square minus b square by grouping. I mean by grouping. So what I will do is, I will observe a little and then I'll find that, अच्छा जरा देखो तो बाबू,
a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? सो यू पीपल नो दैट इट्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी. अच्छा, एक बात और, a प्लस 2 का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच? a प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो यू विल से सर इट्स a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a into b means 4a, and plus b square, 2 square. So 2 square is equal to 4. This means that here they have given you square of a plus 2. They have given you square of 2 which was hidden, minus b square. अब तो बना लोगे, मुझे पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी. अब तो बनना ही है. सिमिलरली नंबर 19 में भी बाबू इट इज ऑफ द सेम टाइप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b एंड माइनस 1. तो as soon as I told you that these three numbers are in square, तो दिमाग में तो वही आया होगा कि ये तीनों जो है they are in square numbers, but you will have to see that a square, when you will take minus common from these all three, so you will get b square plus 2b plus 1. And now this is the square of ये वाला, this is the square of b plus 1. तो b plus 1 का square is equal to b square plus 2b plus 1 का square is equal to 1. So I can write this as b plus 1 whole square, and here a square is already given. So you have a square minus b square, which can be further written as a minus b and a plus b. तो a plus b and a minus b मैंने अंदर वाला. So sign will change, minus b minus 1. ठीक है? I hope no issue is there. चलिए, so moving on to the next one, that is number 20, the last one. तो इसे क्यों छोड़े हम लोग? तो number 20, the last one says factorize x square plus 6x plus 9 minus 4y square. तो ठीक है, मैं इसे फैक्टराइज करूंगा and I find that ये वाला portion, this one is the square of x plus 3. So x plus 3 square is equal to x square plus 3 square, that is 9, plus 2 into a into b. 2 into x into 3 is equal to 6x का whole square, and here please convert this also as square. तो ये हो गया आपका 2y का whole square. So a square minus b square के फॉर्म में a plus b and a minus b. So a plus b and a minus b is your final solution, isn't it? So this, until and unless you people practice, nothing can be. So I would just say practice, isn't it? Keep on practicing. चलिए.